Hello everyone, welcome to my YouTube channel. How are you all? I hope fine. So today in this video we are going to have discussion on very important and multiple choice questions related to subject of Indian Penal Code 1860. These MCQs are important and very easy. I hope that you people know. I will be telling you the meaning of that, explanation of that and correct answer. But people do try to test and score yourself. Do you people also do this mock test by yourself and drop the answers of every question below in the comment box, or you people can take the screenshot of this question when you are doing the MCQs of this video. ठीक है, आप लोग करिएगा and do let us start and all the best. Now, question number 1. It says that the doctrine of transfer of malice is contained under Indian Penal Code in Section 299, Option B, Section 301, Option C, 304A, Option D, 300. So, what is the correct answer of this question? जो डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस है वो आईपीसी के कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है? आप लोग सेक्शन 301 देखिए इंडियन पिनल कोड का, वो बात करता है कौन सा सेक्शन? 301. इट इज डीलिंग विद द कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड. और इसके लिए आप केस प्रेफर करना जगपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1991. देखो उस केस के अंदर क्या हुआ था, एक्यूज्ड इज पनिशेबल फॉर मर्डर अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस अंडर सेक्शन 301 when he aimed at one person but killed another person. So the accused was here punished for the under the doctrine of transfer of malice under 301. So you people can see that doctrine of transfer of malice is contained under Indian Penal Code in section 301. So B is the correct answer. You people can prefer section 301 for this question. Okay. Now, question number 2. It is important. See, question number 2 के ऊपर I have already made the video. When two or more person indulging in fight at a public place and thereby commit breach of peace, they commit the offense of option A, riot, option B, robbery, option C, affray, option D, none of the above. So, what is the correct answer of this question? Yeah. When दो और दो से ज्यादा लोग जो हैं they are fighting in a public place and उसके वजह से public peace पे क्या हो रहा है? There is disturbance to the public peace. So what type of offense the people are committing? So what is the correct option? क्या riot है वो? No, riot नहीं है. Robbery? No. Option C, affray. Yes, C is the correct answer of this question. Refer section 159 of Indian Penal Code for this question. 159 प्रेफर करिए आईपीसी का इस क्वेश्चन के लिए, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए. इसकी पनिशमेंट देखिए 160 के अंदर क्या बात करता है वो. ठीक है. Question number 3, what it says? It says, which one of the following factors distinguishes robbery and dacoity? बताओ. Option A, time span, property, option C, number of offender, option D, place of offense. This is very important and very easy. कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रॉबरी और डेकोइटी को डिस्टिंग्विश करता है इन ऑप्शंस में से? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, नंबर ऑफ ऑफेंडर्स. You should know. See, dacoity में when 5 or more person co-jointly commit or attempt to commit a robbery, you people can prefer which section for dacoity? 391 prefer करिए आप dacoity के लिए. Robbery के लिए कौन सा section prefer करेंगे आप? You have to refer section 390 for this robbery. ठीक है. आप लोग इनकी डेफिनेशंस को देखिए और इसमें देखिए डेकोइटी और रॉबरी में क्या डिस्टिंक्शन है. यहाँ पे डायरेक्ट है नंबर ऑफ ऑफेंडर से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं रॉबरी और डेकोइटी को. फॉर मोर क्लैरिफिकेशन रेफर योर बुक्स. Barracks. Now question number 4, it says that maximum period for which a convicted person may be kept in solitary confinement is. Maximum period for which convicted person may be kept in solitary confinement is. Up option A, that is 2 months, option C, option B 3 months, option C 6 months, option D 1 year. So what is the correct answer of this question? देखो इसके लिए सॉलिटरी कंफाइनमेंट इज वन ऑफ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक. आप लोगों को पता होना चाहिए. इससे रिलेटेड प्रोविजन यू पीपल विल बी गेटिंग अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन पिनल कोड. सॉलिटरी कंफाइनमेंट ठीक है, राइट. सॉलिटरी कंफाइनमेंट के अंदर है. अब आप लोग यहाँ पे बोलता है कि
maximum period for which a person may be kept in solitary confinement is what? Maximum period, not minimum. Okay. So maximum period is what? It has been clearly seen. You people can check out section 74 also. ठीक है, सेक्शन 74 के अंदर लिमिट बताई गई है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, इंडियन पीनल कोड की. वहां पे डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. 3 months is the correct answer. That maximum period for which a person convicted may be period is 3 months. Now question number 5, it says that revealing the identity of the victim of rape is punishable under which of the following sections of IPC? जो रिवील करना आइडेंटिटी ऑफ किसी रेप विक्टिम की वो पनिशेबल है. यस, you cannot reveal the identity of the rape victim. And it is punishable under which sections of IPC? A. Section 354D. No. Section 229. No. Section 376E. No. Section 228A. Yes. It is punishable under section 228A. It talks about disclosure of identity of the victim of certain offenses और उनमें से रेप भी एक ऑफेंस है. इस सेक्शन के अंदर 228A के अंदर पनिशमेंट दी गई है. You people refer that imprisonment can be up to which year? 2 years. It is fine. It is cognizable offense. It is this. You people can check out when you will be studying the section 228A. Refer this particular section and it is very much important. You should know this question also. And कि ये reveal करना विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील करना रेप विक्टिम की ये पनिशेबल है कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है आईपीसी के 228A के. So you should know this also. Now question number 6. It says that the distinction between similar intention and common intention was clarified in the case of option A Barinder Kumar Ghosh versus King Emperor, option B Mehboob Shah versus Emperor, option C Srinivas Mal versus Emperor, option D all of the above. So what is the correct answer of this question? So इसका direct answer है option B is the correct. आप लोग केस को देखिएगा. महबूब शाह वर्सेस एम्परर ऑल इंडिया रिपोर्टर 1945 का केस है वो. आप लोग देखो इसके अंदर हमें डिस्टिंक्शन मिला था बिटवीन सिमिलर इंटेंशन एंड कॉमन इंटेंशन के बीच में. रेफर दैट. Now question number 7. Question number 7 is for you people. You people tell me the answer of this question below in the comment box that A instigate B to murder C. B refuses to do so. Now A is guilty of option A no offense, option B abatement to commit suicide, option C attempt to murder, option D criminal conspiracy. आप लोग मुझे इसका आंसर below comment box में बताओ कि क्या इसका correct option है. Now question number 8, it says that which one of the following is not correctly matched. से ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा correctly matched नहीं है. Option A bribery at election section 171B, option B affray section 159, option C thug section 310, public nuisance section 267. So बताइए कौन सा इनमें से correct option है. पहले तो ऑप्शन ए डी सी दीज थ्री आर द करेक्टली मैच्ड. ठीक है, ए फिर आपने देखा है 159, थर्ड आपने पढ़ा है 310. डी पब्लिक न्यूसेंस नो दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 268 of Indian Penal Code. So D is the correct option कि which of the following is not correctly matched. So the option D is not correctly matched. This is the answer. Now, if you people have any doubt, do let me know below in the comment box and do like and subscribe my YouTube channel for more videos. And if you people want more videos like this, kindly watch the full videos first and do try to score, test and score yourself that how much you know. फिर जाके आप question करिएगा, ठीक है? And next time, next video I will be uploading very soon. And thank you so much.